एक धनवान जवान अधिकारी। एक दिन एक धनवान जवान अधिकारी येशूकन आईन हिने विचारानं लाग्यो व सबंती मोठा गुरु अनंत कालનું જીવન મિલાના વાસ્તર મહે શું કરનું। येशूએ हिने विचार्યું, તું હે મન सबंती मोठो गुरु शे बोल्યું। एक देव शिवाय કોઈ सबंती मोठो काही कोणी। पण जर तुन अनंत कालનું जीवन पाहिजे हुशेन तो देवनी आज्ञाનું पालन कर। हे बोल्યું, केवी आज्ञाનું पालन करानी मन गरज छ। येशूए हिने बोल्યું, तू खून करो नको, चोरी करो नको, खोटो बोलो नको, अपना आई बापनो आदर कर, अन जिम स्वतः पर इमज तारा शेजारी केळे बी प्रेम कर। पण यो जवान आदमीए बोल्યું, आज सबन आज्ञाओનું पालन तो मग बचपनतीच करतो आવું करूच। युगान युग जगाना वास्तर मन अजून શું કરવાની ગરજ છે। येशू हिना आळी देख्यो अन हिना पर प्रेम કર્યો। अन येशूए हिने बोल्યું, जर तू परिपूर्ण होवानं देखू करतो हुशेन तो जा अन तारी सबन धन दौलत येचीन यो पैसा गरीबून वाटी द, म्हणजे तुन स्वर्गम धन मिलशे। फेरी आव अन मारा पाछल चालानं लाग। येशूનું આમ બોલનું આઈકીન यो जवान आदमी घणो नाराज हुई गयो। इमकयो घणो धनवान थो अन हिना कन्नी धन दौलत दुसरानं देवानी हिनी इच्छा कोनी थी करीन यो येशू कंती चल्यो गयो। फेरी येशूए हिना चेलावनं बोल्યું, धनवानનું સ્વર્ગમાં જાનું ઘણું કઠિન છે। આવા ધનવાનનું સ્વર્ગના રાજ્યમાં જાનું આત્ર કઠિન છે કે ઊંટનું સુઈના નાકમાંથી નીકળનું સોપું છે। જદ ચેલાવીએ આ આઈક્યું તો યોય ઘણા हैरान हुई गया अन बोल्या, तो फेरी किनो उद्धार हुई सकत। येशूए चेलावाडी देखीन बोल्યું, लोकोना वास्तर स्वतःहून उद्धार करावनं घणું कठीण છે, पण देवना वास्तर काहीच कठीण काही कोणी। पेत्रे येशूनं बोल्યું, हम सबन काही छोडीन तारा पाछल आई रह्यात तो हानु हमनं सुई नाम मिलशेन। येशूए हुनं बोल्યું, जीवे मारा वास्तर घर भाई भेन आया बा लड़का नहीतर धन दौलत छोडी राखीत हिवनं यो 100 पट्टी जास्त मिलशेन अन हिना केळ अनंत कालનું स्वर्गीय जीवन बी मिलशेन। पण घनाच आगल्याना पाछल अन पाछल्याना आगल हुशेन।